guys, Namaste. Welcome back to my channel. Today we'll be making some home decor. I'm sharing two DIYs and both are very simple, cute and nature inspired. So let's get started. First we will be making this tassel wall hanging. For this we need some wool or yarn and a wooden stick. I got mine when we went for a little hike nearby. Take whatever colors of wool you have and a lid and a scissor. So I'll start looping around the wool around this lid 60 times. Now I'm taking some white yarn and I'll tie a knot at the top like I'm doing here. तो मैं उतना बड़ा white yarn लूँगी for every tassel, like approximately उतना लूँगी जितना मुझे लगेगा कि stick पे hang करने के लिए I will need that. अब हम इसको लिड में से निकाल देंगे and then we will cut it with the scissor to form the tassel. तो अब मैं इस tassel को कट करके साइड में रख दूंगी क्योंकि अभी ये properly groomed नहीं है. तो पहले we'll make all the tassel. I'm making 9 tassels in total और फिर हम उसको अच्छे से groom करेंगे. So in the same way I'm making 8 more tassels with different colors. In this one मैं जब white knot पहले लगा रही थी तो वो properly tight नहीं लगी थी तो मैं अभी उस पे एक बार और knot लगा दूंगी और इस बार एकदम tight कर दूंगी. In the same way, I made my all 9 tassels as you can see here. तो इसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ऊपर से और फिर ऊपर की साइड थोड़ा सा like 1 सेंटीमीटर नीचे व्हाइट यार्न को टाइटली लपेट देंगे 3-4 टाइम्स. After looping it around tightly, make multiple knots so that it is very durable. Next, I'm trying to straighten all the pieces of yarn as much as possible. So that हम उसको नीचे से एक लेवल में कट कर सकते हैं और ऐसे अलग-अलग लेंथ के थ्रेड्स नहीं दिखेंगे. एंड इसी तरह हम बाकी के टैसल्स को भी अच्छे से ग्रूम कर देंगे. एंड हियर इज हाउ दे लुक आफ्टर ऑल द ग्रूमिंग.
Now let's tie them to the stick. तो फर्स्ट मैं अरेंज करूँगी कि मुझे अपने टैसल्स को कैसे लगाना है, किस लेंथ में लगाना है. आई एम ट्राइंग टू गेट द वी शेप. तो मैं बीच में से स्टार्ट करूँगी, सबसे लंबा, देन उससे छोटा छोटा छोटा, लाइक दैट. दिस इज द पैटर्न आई वांट एट द एंड. सो अब मैं नॉट्स लगा दूंगी सारे टैसल्स को स्टिक पे. और एक बार के लिए आई ओनली टाई 2 नॉट्स बिकॉज एट द एंड मैं उसको हॉट ग्लू से सिक्योर करूंगी. After tying all the knots, I'll cut the excess thread, leaving little bit for the adjustment at the end if it is needed. Next, I'm taking a jute thread. If you don't have jute thread, you can use the white yarn itself. और फिर मैं उसको stick के दोनों end पे tie कर दूंगी to make it hangable. Now I'm hanging it vertically ताकि मैं अपने tassels को एक final position में arrange करके hot glue से secure कर सकूं. So I'll put a drop of hot glue on the knots I have tied, and then I'll cut the excess thread, and I'll repeat the same thing for all the tassels. Lastly, I have attached this battery operated fairy light to the stick with a blue tack, and I've wrapped the lights around the stick like this. And here how it looks at the end. Next, I am making a beach-inspired photo frame. For this, I am taking a white photo frame, removing all the backings it has. To decorate it, I am using this puffy paint and 3D liners, some shells and rocks. For giving the sand effect, I am using this gold glitter puffy paint, and I'm applying it on the frame directly, and then I'm using a brush to dab it on the frame to give it like a sand effect. And in the same way, I'm going to make the water as well. Once all this 3D liner dry completely, we'll stick the shells and rocks. But to be honest with you, मैंने सूखने का वेट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उसके बाद शूट
करने के लिए। तो थोड़ा सा सूखा और मैंने अपने शेल्स और रॉक्स ऐड कर दिए टू गिव यू गाइज एन आइडिया। बट आप लोग प्लीज सूखने का वेट कर देना, तो इजीली चिपक जाते हैं। And our beach inspired photo frame is ready. How does it look? Let me know in the comment section below which DIY you like the most. Like this video if you like it, and if you recreate any of this DIY, please share your recreation with me on Instagram, Facebook, or you can email to me. I love to share your recreation in my videos. And subscribe if you haven't already. I'll see you soon. Bye. Love being creative.